বেগুন দিয়ে অনেক রান্নাই তো হলো, চটচটি এই রান্নাটা একবার করে দেখুন তো। முட்டை கலக்கி அழகி போவாத ரொம்ப விலகி சிலுங்கி এই গরমে 2 মিনিটে এই রান্নাটা কিন্তু খেতে দারুণ। তেল দিয়ে বেগুনটা একটু ভেজে নিন, নুন হলুদ অ্যাড করুন। একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। আর একটা চলুন চটচটি মিক্সিতে একটা মশলা বানিয়ে নিই। மனசு ஃபுல்லா உன் மேலதான் திருந்தி போன ஒன்னாலதான் திரியிற உன் பின்னாலதான் ஓகே சொல்ல கண்ணாலதான் புதுசா பிறந்த ஃபீலிங்குமா சிரிச்சா ஹார்ட் ஹீலிங்குமா ওইদিকে আমাদের বেগুনটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, ব্যাস মশলাটা অ্যাড করুন। আর কিছু করতে হবে না, আপনার একটু ঝাল ঝাল বেগুন রেডি। কি কোনো রকম কষ্ট হলো? গরমে ঘামতে হলো না, কত তাড়াতাড়ি রান্নাটা হয়ে গেল। তাহলে অবশ্যই বাড়িতে কিন্তু এটা করে ফেলুন, খুব ভালো লাগে গরম ভাতে খেতে।